Okay, thanks so much. Okay, once again, welcome and assalamu alaikum to everyone. Okay, assalamu alaikum and good morning to everyone. Okay, and today we are going to start with the topic that is process state diagram. Okay, so this process state diagram is a very important question as far as your examination is concerned, because this question is always there for 5 months or 10 months. So 5 months के लिए तो कम रहता है, लेकिन 10 months के लिए ज्यादा रहता है. Okay, so process state diagram. Process state diagram last में हम लोग ने देखा था, but I don't have that diagram, so we'll draw the diagram again. Okay, I told you that we have five processes. Sorry, we have total five state of each and every process. Okay, and we also know that, okay, whenever the program or application is started, so the process of that particular application is created by the operating system in background. Okay, and that process is very important. Okay, if the process is alive, okay, if the process is alive, then only your application or your program is alive. Okay, if some other process, if someone external person kills the process, kills the process of your application, then your application will automatically be killed. Okay, so we need to understand that के the process is very important for program, because जैसे बोलते हैं ना कि आदमी के अंदर उसकी आत्मा है. ओके, जिसको हम लोग सोल कहते हैं, जिसको हम लोग रूह कहते हैं. तो वैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर उसका प्रोसेस. ओके, so if the program or application is executing, okay, it means that there is a process inside it. Okay, मतलब कि कुछ ना कुछ तो process. और अगर प्रोसेस किल हो गया, सो दैट पर्टिकुलर बंदा जो है, जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इज गॉन, इज किल्ड. ओके, इज टर्मिनेटेड. ओके, so in the simple way we can understand. Okay, so we have total five state of any process. Okay, for those who didn't understand, excuse me, I need to take this call. Who's calling? I don't know. Okay, so as I told you that we have total five state. Okay, and your process may be in any of the one state. Okay, so starting from this particular start. Okay, so when you click your application, when you double click on your application, so your process is created. So that particular state is called as the new state. Okay, so I call it as a new state. So I'll be drawing one. Okay, so I have this new state. Okay, so this is the new state. Okay, where the process is created. Okay, now the process is created only. Okay, now we have to move ahead. For the execution of this particular process, what we have to do, we have to allocate the required resources. Okay, for execution purpose. Okay, तो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो उसको दे दो. उसको मतलब बोलते हैं ना, अभी घर से निकल रहे, तो आई गेव यू वन एग्जांपल दैट if a kid is going out for school, then we have to get him with all these necessary requirement. Like we have yeah, he is having the water bottle or tiffin or bag. Okay, so whatever we have, okay, whatever we give, so this we have to give all those things. Okay, so he's now geared up. Okay, so after that particular new process, we have a next state. Sorry, मैं बार-बार process बोल रहा हूँ. It's not a process, it is a state. Okay, so this is one state where the process is created. We have next state. This state is called as the ready state. Okay, this is the ready state. Ready state is the one state in which I can say that your process is geared up with all these required resources. Okay, जो water bottle देना थी, जो tiffin box देना था, bag देना था. Okay, everything is given. So process को सब कुछ मिल चुका है. Now this process is geared up with all the required resources and ready for the execution. Okay, now if it is ready for the execution, then what we have to do?
वी हैव अभी जाके लाइन में लग जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। सो रेडी में आपका प्रोसेस रेडी है, ओके। तो रिसोर्सेज हैव बीन अलोकेटेड, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, और बहुत वो हो जाएगा। उसके बाद में वी हैव रनिंग स्टेट, ओके। अब इस ये भाई साहब ने, अच्छा यहाँ पर पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग देखते हैं। सो आपका जो रेडी स्टेट से, अब यहाँ पर भाई साहब ने आपके लगा दिए नंबर, ओके। एंड आई गिव यू वन एग्जांपल आल्सो दैट के ऑल द प्रोसेस विल बी लाइक इन द जॉब पूल, ओके। जैसे जॉब पूल में सब होता है ना, कि सारे के सारे एक साथ में लाइन में लगे रहते हैं। So we have all the processes in the process pool. Okay. So we have a pool over here. Okay. Just imagine this pool. Okay. This is a pool, and all the processes are waiting like anything. Okay. So process one, then process two, then process three, then process four, and so on. Okay. So one, two, three, four. So all these processes are waiting. Okay. Now, first of all, पहले वाले का number आएगा is it is ready with all the required resources. So it will go to the running state. Okay. So we have third state, which is running state. So in the running state, your process one will be allocated. Okay. So process one will go for the running state, and after running and after execution, if it does not require anything externally, then it will complete its execution and it will go out for the termination. And that termination is nothing but the dead. Okay, I can simply say this is the dead state. Okay, this is dead state. So new, ready, running, then dead. Okay, so this is case one. Some of the process may require some external resources. Okay, that resource may be input output device को access करने वाला resource. For example, आपने CD डाली, आपने वहां से कुछ access करना है, so that's the input device we are giving the input. Okay, and उसके बाद में फिर आपको कुछ, आपने USB pen drive लगाया, आपको कुछ access करना है, so for that purpose also you have access. Okay, और ऐसे ही आपको कुछ नेटवर्क से लेना है, उसके अलावा फिर आपको कुछ मतलब कि अपने एक्सटर्नल ड्राइव से लेना है। सो एनीथिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस से अगर आपको कुछ लेना है, एक्सेस करना है, सो फॉर दैट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिसोर्स। ओके, इफ योर प्रोसेस वांट्स टू एक्सेस दैट रिसोर्स, देन ये यहाँ वाला रिसोर्स को रिलीज करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए। ओके, तो थोड़े समय के लिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको जॉब पूल, आपको मैंने ये पूल बना के बताया हो ना, सो दिस पूल इज बेसिकली यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज नॉट वही, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो लेट अस से योर प्रोसेस वन from pool it comes to the running state. Okay, and after successful completion, after successful execution, it will go to the dead state. तो आपका process one has completed the execution. Okay, so process one has completed its execution now. Okay, now process two will come. Okay, so process two will be given a chance to execute. So यहाँ पर भाई हमारे सीपीयू भाई साहब बैठे हैं, जो कि हमारे सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। So CPU will be executing all these processes. Okay, so process one has been executed successfully, and it is sent to the dead state. Okay, which is normal execution. Okay, and after that process two will come. Okay, so when process two will come, so after completion of 50%, after completion of 50% execution, it has a requirement of IO devices. Okay, maybe it wants to access some data, some information from the IO device. Okay, so अब यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो IO device को access करना चाहता है, तो हम लोग को उसको running state से हटाना पड़ेगा। हम लोग उसको ऐसे नहीं रख सकते, बिकॉज वो क्या करेगा, रनिंग स्टेट में रहेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई वी आर मूविंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द अनदर स्टेट। जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पहले इसको मैं लिख देता हूँ, दैट्स अ वेटिंग स्टेट और स्लीप स्टेट। ओके, सो इट इज वेट और स्लीप। ओके, इट इज वेट और स्लीप स्टेट। ओके, तो यहां से आपका प्रोसेस जा सकता है वेटिंग और स्लीपिंग। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, you cannot keep your process in the running state, and because your CP is also one of the resource and IO is also one of the resource। तो यहाँ पर IO रिक्वेस्ट, IO जो भी है प्रोसेस के लिए, IO इनपुट आउटपुट एक्सेस के लिए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए आपका आया है, ठीक है। तो वी वर इमेजिनिंग दैट आपका जो प्रोसेस टू है वो रनिंग में था, इट हैज कंप्लीटेड 50% एग्जीक्यूशन, एंड आफ्टर 50% एग्जीक्यूशन
उसको उसको कुछ रिक्वायरमेंट आया, ध्यान नहीं आया, उसको कुछ रिक्वायरमेंट आया कि मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस से, मुझे यूएसबी से मुझे कुछ एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, तो सिस्टम बोलेगा भाई तू रनिंग स्टेट में बैठ के क्यों कर रहा है, तो एक काम कर, तू साइड में होके काम कर। होता है ना, बोलते हैं ना आप लोग क्यू में लगते हैं पास के लिए, और दूसरे क्यूज में लगते हैं, लाइन में लगते हैं, और वो बंदा जो है तो फोन पे बात करता है कि मतलब कितना टिकट लो क्या लो, तो पीछे वाला क्या बोलता है, तो एक काम कर, तू साइड में हो जा, साइड में होके बात कर ले, और फिर बाद में हम लोग को टिकट निकालने दे जब तक, उसके बाद में तू वापस आ जाना। ऐसे ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। तो वैसे ही कुछ सिस्टम यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो अच्छा, वो जो बंदा बीच में फोन पे बात करे ना, मैं आपको एग्जांपल इससे देता हूँ कि एग्जांपल से आप लोग को थोड़ा सा माइंड और आपका क्लियर हो, और आपको वो चीज याद में रहे, बिकॉज कभी कभी एग्जांपल से भी चीजें याद रह जाती है। ओके, सो वो आदमी जो फोन पे बात कर रहा था, फोन में बात करते करते वो दूर चला गया, ठीक है, दूर चला गया, और 5 मिनट के बाद में आया। तो 5 मिनट के बाद में आएगा तो क्या वो वहीं पे लाइन पे लगेगा जहां से वो हटा था? नहीं। अपनी मुंबई की पब्लिक बहुत शानी, क्या करेंगे, बाय बाय, बीच में नहीं घुसने का, बीच में नहीं आने का, उसको बोलेंगे चल लास्ट में जाके खड़े, ठीक है, क्योंकि वो अगर इमीडिएटली वहीं पे खड़े होके बात अगर कर लेता और फौरन 1-2 सेकंड में अगर आ जाता तो उसको ले लेते, ठीक है, दैट्स अनदर केस। बट अगर वो 5-10 मिनट के बाद में आ रहा है तो क्या उसको बीच में लेंगे? फिर नहीं लेंगे बीच में। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज कोई इसको जानता ही नहीं, जो 2-3 लोग थे आसपास वो भी अपना टिकट निकाल के चले गए या अपना काम करके चले गए। ओके, नाउ नो वन इज देयर हु कैन रिकॉग्नाइज हिम और हर दैट ही और शी वाज प्रेजेंट बिफोर 5 और 10 मिनट्स। ओके, तो उसको बोलेंगे भाई जा तू वापस से लाइन में लग, तो वापस से लाइन में लगेगा, फिर टिकट निकालेगा या जो भी काम करना है। ठीक है, छोटा सा एक मैंने आपको उदाहरण दिया, थोड़ा सा एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका प्रोसेस नंबर 2 है, इमेजिन योर प्रोसेस नंबर 2 हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन 50%। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50% एग्जीक्यूशन, नाउ इट हैज अ रिक्वायरमेंट टू एक्सेस द आईओ डिवाइस। ठीक है, तो आईओ डिवाइस एक्सेस करने के लिए गया, तो सिस्टम ने बोला भाई भाई तो एक काम कर, तू चला जा वेट और स्लीपिंग, मतलब तू वेटिंग में चला जाए। ठीक है, वहां जाकर तुझे आईओ एक्सेस करना है, जितना एक्सेस करना है कर, लेकिन यहाँ मत कर। ठीक है, बिकॉज हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ओके, एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वी हैव टू process multiple process, we have to process multiple, we have to execute multiple processes, number of processes per second। ठीक है, तो आप 1 सेकंड में जितनी ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएंगे उतना आपका क्या बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका सिस्टम बोलता है भाई साहब तुम चले जाओ, वेटिंग में चले जाओ, ठीक है, स्लीप मोड में चले जाओ, ठीक है, और वहां जाके अपना काम करो, और उसके बाद में वापस आओ। ठीक है, तो ये भाई साहब आपके प्रोसेस नंबर चलते चलते बेचारे दुखी आत्मा आ गए यहाँ पर। ठीक है, प्रोसेस नंबर 2 यहाँ पर आ गया, इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स 50% एग्जीक्यूशन। ठीक है, 50% एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद में भाई साहब यहाँ वेटिंग स्टेट में आ गए। नाउ इट हैज स्टार्टेड यूजिंग द आईओ डिवाइस। ठीक है, तो भाई साहब ने आईओ डिवाइस यूज किए, जो भी डेटा एक्सेस करना था, रीड करना था, राइट करना था, जितना भी करना था कर ली। अच्छा, meanwhile what is happening and at this particular situation, so your process 3 will come for execution, your process 3 will come for the execution। तो प्रोसेस 3 भाई साहब आ गए उस टाइम पे, देखो हमारा टाइम पास नहीं हुआ यहाँ पर, हमने 2 पे बोल दिया तो साइड में हो जा, और उसी टाइम में आपका प्रोसेस 3 आ गया एग्जीक्यूशन के। तो क्या हमारा सीपीयू, क्या हमारा प्रोसेसर आइडल रहा, फ्री बैठा रहा? नहीं बैठा रहा। हम लोगों ने कोशिश की है, हमारे शेड्यूलर ने कोशिश ये किया कि जल्दी से एक प्रोसेस हटा दूसरे को लगा दिया, दूसरा वेटिंग पे गया तीसरे को लगा दिया, लाइक दैट। ओके, सो अब भाई साहब का काम हो गया। ठीक है, नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम वन। ठीक है, तो योर प्रोसेस 2 हैज कंप्लीटेड इट्स आईओ रिक्वायरमेंट, आईओ प्रोसेसिंग, जो भी था इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस करके रीड करना, राइट करना, व्हाटएवर द टास्क वाज, नाउ इट हैज कंप्लीटेड। ओके, नाउ इट वांट्स टू कम बैक एंड एग्जीक्यूट, ओके, हिम और हिमसेल्फ, ओके, इटसेल्फ। तो आपका जो प्रोसेस नंबर 2 है वो वापस आना चाहेगा, तो वो जब वापस यहाँ पर आएगा, जब भाई साहब यहाँ से यहाँ पर वापस आने की कोशिश करेंगे, तो लोग बोलेंगे भाई बीच में घुसने का नहीं। ठीक है, तो जब बीच में नहीं घुसने का तो फिर बेचारा उदास हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, सिंपली इट विल गो बैक एंड इट विल गो टू द रेडी स्टेट। ठीक है, रेडी स्टेट में जाएगा और ये 4 नंबर के पीछे अपना नंबर लगा लेगा। ठीक है, ये कौन सा है, प्रोसेस नंबर 2 है, विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स 50% एग्जीक्यूशन। ओके, आफ्टर आपका उसके बाद में थर्ड रनिंग हुआ, थर्ड सक्सेसफुल चला गया, आपका यहाँ पर थर्ड आ गया, देखो सक्सेसफुली थर्ड हो गया।
उसके बाद में 4 आया, 4 ने भी सक्सेसफुल कंप्लीशन कर लिया, चलो 4th को भी ले लेते हैं, 4th का भी आयु रिक्वायरमेंट आया, तो 4 भी यहाँ चला गया, 4 अपने आयु रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने चला गया, और उसने फॉर एग्जाम्पल 40% कंप्लीट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आने के बाद में उसने भी अपना काम किया और वापस से यहाँ पे लगेगा, तो उसके पीछे इसका नंबर लगेगा, इसका नंबर, प्रोसेस नंबर 4 का, जिसने कितना कंप्लीशन किया है, 40% कंप्लीशन किया, ठीक है। अब 4 यहाँ पर हो गया, अब 2 का नंबर आ गया, भाई साहब बड़ी देर हो गई लेकिन नंबर आ गया, ठीक है। तो 2 अब यहाँ पर रनिंग करेगा, अपना बचा हुआ 50% एग्जीक्यूट करेगा, और फिर आपका यहाँ पर नॉर्मली एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो योर प्रोसेस 2 is completed now, okay, with 100% completion. After that your process 4 will go, आपका प्रोसेस 4 वापस आएगा, and it will complete the remaining 60%, it will complete the remaining 60% execution and it will come by, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, so आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा, because that we are going to learn in the process scheduling algorithm also. We have different process scheduling algorithm, and based on the different criteria, it is not necessary that the if 4 or 5 processes has gone for the execution, then it is not necessary कि जिस sequence में वो गए हैं वही sequence में वो execution भी complete करें, okay। We have seen in the pool that process 1 2 3 4, it was the sequence in the pool, okay, but what is the result? You can see 1 3 2 4, okay, because 2 was having some requirement, okay, so it has gone to the wait or sleep mode and then again come back to the ready state, then ready से वापस से running में, और running से आके फिर चला, ठीक है। सो ये चीजें होती है हमारी प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। एंड वन मोर थिंग इज पॉसिबल, होते बोलते हैं ना, सोते में किल कर दिया, सोते में उड़ा दिए, तो वैसे ही कुछ हो सकता है हमारे कोई हमारे किसी भी प्रोसेस के साथ में, ठीक है। with any of the process, it may happen that it is also possible that if the process is there in the waiting or sleep state, then वहीं से उसको वहीं से चला गया वो डेड में, यानी कि वहीं से वो किल हो गया। हो सकता है कि बाय मिस्टेकली आपने किल कर दिया हो, या हो सकता है किसी और इंटरप्शन की वजह से, कॉज ऑफ द हार्ट डिस्क फेलियर, कॉज ऑफ एनीथिंग एनीथिंग, आपके सिस्टम का कुछ भी फेलियर की वजह से आपका जो प्रोसेस जो कि बेचारा एग्जीक्यूशन छोड़ के आयु रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने आया था, और वहीं पर उसका निधन हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये जो टर्मिनेशन होता है, तो इस टर्मिनेशन को बोलते हैं एब नॉर्मल टर्मिनेशन, ओके। तो ये आपका नॉर्मल टर्मिनेशन है और ये एब नॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पर इज्जत की मौत है, ठीक है। यहाँ पर आपके प्रोसेस की इज्जत की मौत है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन एंड गॉन टू द डेड स्टेट, ठीक है। डेड मतलब कि भाई कंप्लीट हो गया प्रोसेस आपका, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, नाउ इट इज गॉन टू द डेड स्टेट, ठीक है। और बेचारा कोई जिसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो कुछ अपने काम कर ही रहा था, उसी में उसका निधन हो गया, तो वो चला जाएगा डेड स्टेट में, एंड दैट पर्टिकुलर टर्मिनेशन इज कॉल्ड एज द एबनॉर्मल टर्मिनेशन, और ये है आपका नॉर्मल टर्मिनेशन। यहाँ पर 100% कंप्लीट है, ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो आपको जितना आपको एग्जीक्यूशन दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये नॉर्मल टर्मिनेशन है, और यहाँ से जो टर्मिनेट होंगे वो एबनॉर्मल टर्मिनेशन, इसको हम लोगों ने मेंशन किया, ठीक है। सो दिस इज I just wanted to repeat this particular topic so that you can understand more deeply, so that you can also understand, and you will also get the process scheduling algorithm that we are going to learn ahead, okay। सो ये था आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम, जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा और टाइम लगाया भी, एंड थोड़ा सा टाइम हम लोग को लगाना इसके लिए भी था कि हमारे पास थोड़ा सा मटेरियल भी नहीं है, इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दिया आप लोग को। आगे हमारे पास में और भी है टॉपिक, इसको एक काम करता हूँ, पहले मैं सेव करता हूँ, ओके। इसको मैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम प्रोसेस स्टेट डायग्राम, ठीक है, रिवाइज, ठीक है। इसको मैंने किया हूँ, आई कम बैक, if you want then I can share this particular with you people, ठीक है, डाउनलोड एज अ पीडीएफ, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी टॉपिक आगे एक्चुअली एग्जैक्टली क्या है,
process control block तो हो गया हमारा. Okay, we have a next topic in 10 or 15 minutes we will try to complete some other part also. Okay, so we have next topic that is thread. Okay, this is also very we have a question maybe asked from this particular topic. Basically thread, then its concept actually, its concept, then its types. Okay, and user level thread, kernel level thread, and the difference between the types. Difference. चलिए सही लिखने भाई. And we have multi-threading models also. Multi-threading model. Okay. So in this particular topic, we are going to learn about the concept of the thread. Okay. Then the types of thread and the difference between those type. We have user level thread and we have kernel level thread. Okay. So we'll see the difference also. And we have multi-threading models. You know about it. One to one, one to many, and many to one. These are the three multi-threading models. Okay. So let us start with the concept of a thread because it is closely related with this particular topic, that is process. Okay. So let us start with the thread. Basically, your thread is nothing but a lightweight process. Okay. Your process is a lightweight process. Sorry, your thread is a lightweight process. Let me explain with the help of the diagram. So let me call this particular यहाँ पे बनाता हूँ मैं diagram. So this is your process. Okay. अच्छा नहीं बना diagram. Okay, so let me take this particular. हाँ ये अच्छा है बस हाँ. Okay. So this is my process. Okay, this is my process one. Okay, process one. Process number one. Okay, the process which is running. Okay, now you can just imagine okay, you have an application program, you have opened the application program, and in the background for that particular application program we have multiple processes. Okay, sorry, we have one process which is running for that particular application program. उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए हमारा ये वाला प्रोसेस रन. ठीक है. अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं. ठीक है. For this particular process, we may have number of threads. Okay, a process can be or will be of multiple threads. Okay, in the very short or we can explain this particular thread. उसके definition हम लोग ऐसा बोलते हैं. It's a lightweight process. It's a lightweight process. Lightweight process. अब ये lightweight process का ये है कि we may have number of threads, we may have number of, for example आपका ये एक thread हो गया, 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 ये एक thread हो गया. Okay, so all these are nothing but the thread. Okay, and this is the process. Okay, so one process may consist of number of threads. Okay, हो सकता है उस particular process के अंदर बहुत सारे काम चल रहे हो, तो each and every task is being managed by each and every single thread. तो ये हमारा ये एक टास्क, ये एक टास्क, ये एक टास्क, ये एक टास्क, तो सारे जितने थ्रेड है हमारे सारे टास्क हो सकते हैं. We can also call it as the smallest unit of the process. It is the smallest unit of process. Okay, so your thread is the lightweight process and it is the smallest unit of the process. So you can see this is the smallest unit. Okay, you can say this is the smallest unit of the process. Okay, so इसको रब करता हूँ. Understanding purpose. Okay. Okay, so it's a smallest unit of the process. And I told you and just I told you that okay, a process may consist of number of threads. Okay, based on the task. Okay, जैसे आपको बोला ना मैंने, फॉर एग्जांपल आपने कुछ रन किया, आपने कुछ एप्लीकेशन रन किया, लाइक आपने VLC प्लेयर रन किया. ओके, अभी आपका जो VLC प्लेयर रन हुआ, तो VLC प्लेयर बेसिकली क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस आर देयर. ओके, लाइन ऑफ कोड विल बी देयर. एक क्या रहेगा, प्रोग्राम कोड रहेगा. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू राइट अ प्रोग्राम फॉर
you write a program for XYZ task. Okay, so you can write C program, Python program, or any other language program for doing some sort of task. So in the same way, for the VLC player, it is also a program code. Okay, and maybe उसके अंदर 100 lines of code है या 200 lines of code है, so whatever it is, but it is a application and basically it is a program code. Okay, अब उसके अंदर basically क्या है कि we have multiple tasks also in that particular application program. उसके अंदर हमारा process और उसके अंदर हमारे क्या है multiple tasks है. तो multiple tasks को हम लोग we can say that कि those multiple tasks can be handled by multiple threads. Okay, so basically your process consists of multiple threads. Okay, so and your thread is a lightweight process. ठीक है, उसको बोलने के लिए lightweight process, but it is not a process, but उसको एक छोटा सा smallest unit आप बोल सकते हैं. ठीक है, more on that, the task of process and thread is same. Basically, the task which is going to perform by this thread number 1, this thread number 2, this thread number 3, this thread number 4, this 5, this 6 and this 7. Okay, so आपका process का जो task है, your process task, the task of this your process is equal to task of your process 1 is equal to the task of thread 1 plus thread 2 plus thread 3 plus thread 4 plus 5 plus 6 plus 7. Okay, so ये सारे threads का task combine करेंगे, so you will get the task of the process 1. Basically आपके जो co-workers होते हैं basically, तो co-workers किसके लिए काम करते हैं? कंपनी के लिए. तो कंपनी का जो काम होगा बेसिकली कहाँ से होगा? आपके co-workers की वजह से होगा. So in the same way, for any process we have multiple threads. Okay, and if those threads are working, then it means कि हमारा process का काम हो रहा है. And in parallel we can also say that the task of the thread is nothing but the task of the process. Okay, so we can correlate in this way. Okay, so हाँ, we have two types of threads. Okay, ये actual type नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो basically we have two types of thread. एक होता है single threaded process और एक होता है multiple threaded process. Okay, it's a single threaded process and this is multiple threaded process. The concept is very simple. Multiple. Okay, so single threaded process, multiple threaded process. Okay, अब सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है? मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कुछ इसमें बहुत लॉजिकल चीज नहीं. ठीक है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच देयर इज ओनली सिंगल थ्रेड व्हिच इज वर्किंग. सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस इज अ वाइवा क्वेश्चन है, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, सब वाइवा क्वेश्चन. ठीक है, so single threaded process is the process in which only single thread is there, only one thread is there. Okay, single thread. And the multiple threaded process is the one in which multiple threads are present. Multiple threads are present. That's all. Okay, तो ऐसा process जिसके अंदर multiple threads हो उसको multiple threaded process बोलेंगे. And the process which contains only one or single process, single thread, it is called a single threaded process. Okay, so this is all about the simple concept of the thread. Okay, so we are done with this particular concept part. Okay, now we have to move towards the the types of the thread. Okay, so इसको पहले मैं एक बार काम करता हूँ. Thread concept. Okay, whatever we are doing it on the Jamboard, so I'm just saving it so that you can refer it later also, because कभी-कभी क्या होता है कि कुछ क्लास में सीखा हुआ, क्लास में लिखा हुआ, वो कभी हम लोग को याद रखते मतलब रह जाता है. ठीक है, ये दिख क्यों नहीं रहा यहाँ पे मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस आपका है तो? हाँ ठीक है, हाँ अभी आया. चलो, सो यहाँ पर मैं थोड़ा रुकता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा ना लगे कि आप मैं खाली बस भाग रहा हूँ आगे एंड पीपल्स आर जस्ट लिसनिंग. जो अभी तक हुआ, the first part what we have done, it was already done, but I have repeated that particular topic, that is process thread diagram, and after that the concept of the thread. Okay, so इतना topic हमारा हुआ है. So you have any doubt, you have any question? समझ में आ रहा है आप लोग को? Please let me know.
वाई दुनिया बहुत शॉर्ट होते जा रही है भाई, शॉर्ट पे शॉर्ट पे शॉर्ट। ओके, सो I can say that the concept were very easy and you can easily remember these concept like we have a process state diagram and as it is the base for other topics also, like we are going to learn about the process scheduling algorithm, scheduling algorithm. So you can call it as a scheduling or scheduling algorithm, whatever you say. So uh, the process scheduling algorithm के अंदर ही हमारा state diagram clear होना चाहिए, ठीक है? So if it is clear, then that particular topic is very very simple for you people. Okay. So we were having the next topic, that is concept of the thread. Then we understand what is thread. Basically, it's a lightweight process. Okay, it's a lightweight process. देखो, if you just understand the hierarchy of a program of a process, then you just listen this way. Okay, you have application program. एप्लीकेशन प्रोग्राम के बैकग्राउंड में उसका प्रोसेस रन हो रहा है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर यू हैव मल्टीपल थ्रेड्स व्हिच आर वर्किंग फॉर योर प्रोसेस ऑन. Okay, so you have a thread. Okay, so basically we have, it's a lightweight process. It is also called as the smallest unit of a process. Okay, smallest unit. Okay, and you have a single threaded process, we have a multiple thread. हालांकि कुछ मतलब के कुछ सेंस की बात नहीं बनती है, बट देर इज अ टॉपिक, सो जस्ट रिमेंबर. हो सके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, किसी ने पूछ लिया, so at least you can say there's only one thread in a process is called a single threaded process, and in multiple threaded process we have a multiple threads basically. Okay, now come to the next topic, that is the types of uh, threads. Okay, so let me write the things, types of thread. Chalo. We have two types of threads basically. The first is the user level thread. Okay, user level thread, user level, सही लिख नहीं रहा एक्चुअली, यहाँ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है. एंड सेकंड इज द कर्नल लेवल थ्रेड. ओके, kernel level thread. Okay, these user level threads are managed by the users only. Okay, मतलब के यूजर स्पेस में होते हैं यूजर लेवल, मतलब कि उसको यूजर मैनेज, वी कैन से यूजर मैनेज्ड थ्रेड, user managed thread. And about your kernel thread, these threads are managed by the kernels only. Okay, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि these are the OS managed thread, OS managed thread. Okay, so we have two types of thread. One is the user level thread and second is the kernel level. User level, obviously the name itself suggests it is the thread, it is the type of thread which is being managed by the user only. Okay, and the kernel level, higher level. Okay, and these are the important application program, then application, sorry, आपका process, important processes. Okay, एंड दोज प्रोसेसेस के अंदर के जो फिर होते हैं बेसिकली आपके, जो के सिस्टम को चलाते हैं और सिस्टम को ड्राइव करने में आपकी मदद करते हैं, तो ऐसे लेवल के जो प्रोसेस होते हैं उनके जो थ्रेड्स होते हैं वो आपके कर्नल लेवल थ्रेड्स. एंड बेसिकली दीज थ्रेड्स विल बी मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ. ओके, बिकॉज जो आपके कर्नल लेवल का जो काम है, जो हायर लेवल का काम वो आपका यूजर नहीं कर सकता, और जब यूजर नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाला. Okay. So these are the types of two threads. Okay, so user level threads पहले हम लोग करेंगे और उसके बाद में फिर kernel level thread, but we'll learn tomorrow because this is quite long. So we'll learn about the user level thread and kernel level thread, their diagram, their advantages, their disadvantages. Okay, so all these things we are going to do tomorrow. Okay, under the heading types of threads. Okay, so we'll stop over here. Okay, let me stop the recording. Khan